just wanted to say, how did you search me? How did you know me? During the lockdown, just we all are free. So just I'm trying to see some video in YouTube, Okay. and I just seen yours. Yeah. YouTube channel. Okay. So how long have you been following me, Pooja ji, on YouTube? It's been 2 years. 2 years. Okay. Wow, nice. You have been watching my video from London 2 years. Nice. That's great. Yeah. Must be in London, UK, many people they are very professional, like what I feel, right? I have done hairdressing course here. I think it's been 10 years back, Okay. but I haven't started because I just interested in beauty treatment. But when I seen your video, Okay. then I thought, let me learn with you and just I'm thinking to start again. Wow, that's nice. I good to hear about that you have come all the way and to taking classes from me. Definitely, I would like to teach you amazingly, nicely in detail. And yes, I had a many students from UK. Like one student, her name is Shelly. She's also from UK, Okay. and still I'm giving her classes in the morning time. So in UK, in morning time, she gets up 5 o'clock in the morning, and here 11 o'clock. I give classes 11 o'clock, and because she is taking one-on-one classes, which we were discussing that day. Yeah, you told me that. Yes. I asked her. I said, "Shall I just keep her?" She said, "No, I wanted to do it alone only." So she was my ex-batch student. She took classes, but still she has joined in the morning time. I'm giving her classes right in the morning time. But I feel that I remember one student. She was my fourth batch student. Her name is Shagufta ji. She was also from London. She's working in their Supercut. She used to work in a Supercut in Okay. London. I think Supercut is Yeah, not it's a brand there, right? Supercut is a brand there. Like in India, if I talk about looks, I'm working in a brand that she is working in a Supercut. Yes, and one of the client, a student, her name is Shami ji. Shami is also from there only. She has own salon in London, UK, like you. So yes, they are in a beauty experts like you, but they have taken classes from me and they are very happy. And best of luck for the class. I'm telling you, you are gonna learn many things from this class because we have already done our two session Wednesday and Thursday, but today is going to be again my hard work. Like I have to teach you again previously, right? So is all the students going to be today class is going to, maybe it can be 1.5 hours class. We can free by 11:30. I don't know because I have to teach you from beginning so that you can be joined with us together. Best of luck, Pooja ji. Thank you. Thank you. Thank you, and we are waiting for all Thank the you very much. students. We are waiting for all the students. Good, I'm good. Sorry, today also I'm busy. No worries, no worries, So I no try worries. very hard to come out. No worries. Yeah, I'm staying in the car now. I know, Dipiji. And you're also staying in London, right? UK? Yeah, yeah. Okay, so Pooja ji is also, and you also from UK. And she is also joined today. She has the first day. And you both have joined the same day. That's great for us. And I know in there, London, like I think right now is 5:30 or 5:30, yeah. 5:30, right? And 5:30 to quarter to 6, yeah. yeah, and here in India, almost 10:30. So 10:30, yeah. and this is your working hours. Still you have joined. Thank you so much for joining and keep learning and grow. Yeah, today is the first day and then just have a look. Okay? Yeah, thank you. Thanks. And if any questions, any doubt, please feel free to ask me. You can interrupt me and you can ask. No worries, okay? I'm here to teach you everyone. Thank you. Thank you. Yeah, good. Thank you. So in London, where is your salon? In London, where is your salon? I mean, like which city? Coventry. Have you heard Coventry? Coventry. No, I didn't heard about it. So it's It's your not own big salon. city. Okay, so it's your own salon there? Yeah. Okay, that's nice. Very good. How many staff you have there? 6 girls. 6 girls. Wow. So you do hair color or makeup also there? No, I just do beauty treatment, but I'm thinking to start hair, so I thought.
Let me join with you. Sure. So how just give me लोग जब भी हम लोग क्लास शुरू करते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर. तो आप लोग अपना अपना स्मॉल स्मॉल प्रेयर बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर. Yeah, I follow everyone's pray with you. Okay. सबके साथ मैं बोलूंगी. Okay. Anyone wants any prayer request? Okay, no. Let's pray. We'll start with the word of prayer. Let's pray. Good evening, my father. Thank you so much for this time that you have given me, Pooja ji, Sunita ji, and Sapna ji. ऊपर वाले जो नंबर है वो क्या है? लाइट ब्राउन है ना? और नीचे क्या हो गया? फिर 7. हाँ, तो सेवन नंबर इज ब्लॉन्ड, राइट? Blonde. इफ आई टॉक अबाउट सेवन नंबर इज ब्लॉन्ड, तो सिक्स नंबर क्या हुआ? Dark blonde. एग्जैक्टली, दिस इज डार्क ब्लॉन्ड. मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ. ऊपर वाला क्या होगा? द 8 नंबर इज Light blonde. light blonde, right? And 9 number is light is blonde, Very light blonde. very light blonde. और ये है very very light blonde, Very right? very light. हाँ. और second number is darkest brown, darkest brown. तो ये आपके पास ऑलरेडी मैंने राइट डाउन किया हुआ है सो दैट यू कैन सी एंड साथ साथ यू कैन गिव आंसर. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 4.45. अगर हम बात करते हैं तो 4.45 जो है क्या हुआ? ये 4 नंबर इज ब्राउन, ब्राउन वे. पहले हम इसको प्रोनाउंस करेंगे 4 नंबर को, राइट? पहले हम किसको प्रोनाउंस करेंगे? 4 नंबर को प्रोनाउंस करेंगे, फिर 5 नंबर को प्रोनाउंस करेंगे, फिर 4 नंबर को, लाइक दिस. ब्राउन विद mahogany copper. Mahogany copper. Exactly. Brown with mahogany. Brown with mahogany copper reflects. Right? So this is the answer. आपको इस तरह से सॉल्व करना है, राइट? अभी मैं आपसे पूछती हूँ अनदर क्वेश्चन. आप मुझे बताइए 4.26. अभी आई एम गोइंग टू आस्क वन बाय वन. नाउ सुनीता जी, सुनीता रावत, आप मुझे इसका Brown. ओके, लाइट ब्राउन, ओके, विद कम ऑन. Red. Light brown with red. रेड. No, light brown. 6. No, my what? This is 3.5. 5.35. Okay. Mahogany. Light brown with mahogany. Brown. कैन लर्न एंड ग्रो बेसिकली, है ना? तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये जो टॉपिक है, जैसे हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. कभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि सोचो कि ये 7.11 है, राइट? और प्लस ये 7.01 है, राइट? ये 7.10 है. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा? फॉर एग्जाम्पल ये नंबर सोचो, ये नंबर ही नहीं है सोचो, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए आई जस्ट वांटेड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है इसका मतलब. 0.11 का मतलब होता है ट्रू, ट्रू है. 0.1 क्या है? 0.1 क्या है? ऐश. True. 0.1 क्या है? 0.1 इज ऐश रिफ्लेक्शंस. रिफ्लेक्शंस में हम 0.1 को क्या कहते हैं? ऐश. तो 0.1 इज ऐश. तो जहाँ पे वन सिंगल नंबर डबल टाइम आ जाता है उसको बोलते हैं ट्रू ऐश. समझ आया? प्लस 0.1 का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट ऐश. Soft ash. सॉफ्ट ऐश. यहाँ पे लास्ट में 0 आता है तो क्या होता है? इंटेंस. Intense. इंटेंस ऐश. ठीक है, सिंपल तरीके से हम इसको देखते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस? ये 7.44 क्या हुआ? ये कैसे बोलेंगे इसको? हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Copper. नहीं, पूरा कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा इसका? Okay.
blonde with true reflect. हाँ, this is blonde with true copper reflex. Blonde with true copper reflex. Right? Simple. अब हम आते हैं 6.40. कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे बताइए? पूजा जी आप बताइए. Dark blonde with डार्क ब्लॉन्ड विथ. वेरी गुड. 40 isn't it? 40. हाँ. डार्क ब्लॉन्ड विथ क्या? Intense Intense. copper. वेरी गुड. लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर पूजा जी. एग्जैक्टली पूजा जी. एब्सोल्युटली राइट. आपने एक ही बारी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, जबकि आपने कहा कि 10 ईयर पहले आपने इस थ्योरी को समझा था. बट आप इतने अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया विद इन अ मिनट. डार्क ब्लॉन्ड विथ इंटेंस कॉपर रिफ्लेक्स. दैट्स इट. अब लास्ट क्या हुआ हमारा? सॉफ्ट. तो यहाँ पे हम बात करते हैं. लेट्स से 9.01. हाउ विल एक्सप्लेन दिस? It's very light blonde with the ash effect. Very Light blonde with ash effect. Ash reflects. Exactly. Yeah. Reflects. Yeah. And this is the answer. Okay. Very light blonde. Talk about this technique called TTI. तो जब एप्लीकेशन टेक्निक्स की बात करेंगे, ग्लोबल हेयर कलर हो गया, मिड टू एंड लगाते हैं हम, फिर लास्ट में रूट्स करते हैं, रिग्रो टेक्निक की बात करते हैं, अगेन दिस थिंग, और स्ट्रॉन्ग फिनिश की बात करते हैं, तो वो आपका पहले रूट टचअप हो गया, फिर टीटीआई हो गया. ठीक है. तो इस तरह होता है. लास्ट में आपका आता है लॉन्ग रीग्रोथ टेक्निक. लास्ट में क्या आता है आपका? लॉन्ग रीग्रोथ लॉन्ग रीग्रोथ टेक्निक में क्या होता है? 3 टाइप्स में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है. लाइक दिस. फर्स्ट एप्लीकेशन मिड लेंथ, सेकेंड एप्लीकेशन यू हैव टू बी लेंथ, एंड थर्ड एप्लीकेशन हैज टू बी ऑन रूट्स. ठीक है. तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो सबसे पहले हम चलते हैं. फर्स्ट वी आर गोना स्टार्ट विद द वर्जन हेयर टेक्निक. आई मीन ग्लोबल हेयर कलर कैसे करते हैं. राइट. तो ये हम स्टार्ट करते हैं पहले.